So we're going to study spherically symmetric potentials in the sense that we are going to solve Schrodinger equation where the potential energy is constant. Symmetric means what? Symmetric means, for example, cylinder, ये है ना constant potential पे आ गया. So Schrodinger equation में, so we are basically studying angular momentum operators, and in that confirmation we are going to study now Schrodinger equation since in a spherically symmetric potential with change of parameters होगा. When we have a constant potential, we can reduce the number of parameters or distance or from center of origin is constant. So you can reduce three-dimensional Schrodinger equation, three-dimensional Schrodinger equation to one parameter only, है ना, one dimension. और constant है ना, x, y, z. It's only v is only r dependent. So you can say or v is rather when v is constant or v is, you can say it zero also. अब ये है कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल इसका एनालॉग क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारे पास है एनालॉग सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम है ना, सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम. रिमेंबर वहाँ भी हम टू पार्टिकल करते थे ना, एंड सो इफ यू वांट सो टोटल एनर्जी हैमिल्टोनियन टोटल एनर्जी E स्क्वायर बाय 2m प्लस v. अब यहाँ पर चूंकि यू कैन से द हैमिल्टोनियन जो है ना, हैमिल्टोनियन और इसका कम्यूटेटर और क्रॉस p. सो और क्रॉस p क्या है? इट्स एंगुलर मोमेंटम. इसका कम्यूटेटर these are distances constant है ना, and we are it's constant for sure. So commutator of Hamiltonian with L will be 0 or commutator H L z square भी हमारे पास. We are basically interested in L commutators. तो Hamiltonian का commutator these are the HL square or LZL square. They will all come out because of the constant potential. अब ये है कि we are going to solve psi, evolution of psi in a radial coordinate system. Psi क्या है? हम psi का ऐसे radial coordinate और इसका थीटा एंड फाई डिपेंडेंस है, इसका थीटा एंड सो यू हैव अ पर्टिकुलर जिसका लैप्लास मेथड है डिफरेंट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे दो पैरामीटर्स में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे कीपिंग आर फिक्स्ड. ठीक है, दूसरा वेरिएबल रखेंगे. सो उसका अब ये साई का है डिपेंडेंस ऑन थीटा एंड फाई. So if you solve the equation क्या है? X side is equal to E side है ना. So X side is equal to E and on the right hand side क्या है? T plus VR. T ये इसके वाले T लिखा है, T plus V. V is the radial distance. Although it's constant, we will see it. Its side is equal to or this X side is equal to E side. Now, if you want to write it in terms of Schrodinger equation, तो क्या करें? So for radial coordinates, so there are different terms. So we'll have जब हम इसका spherical coordinates में है ना और थीटा फाई में आप देख रहे हैं in the flap end of the book how we can write it in. So इसकी we'll only take radial dependent terms. So we'll just have this thing. इसका form है x square. Suppose 2m r square d by dr r square d by dr plus l square 2m r square plus dr
psi is equal to E psi. ये L कहाँ से लाया हमने? L के बदले आपको m e r, तो m स्क्वायर ये m स्क्वायर आएगा, m स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आएगा ये वाला, it will come out to be m square m e r हो गया m square ये m x square by 2m. So you can see this way. So we have introduced here L के बदले आप ये r cross p और cross p और r cross r square. So ये आएगा r. So you can write it like this. Just see it like this. अब ये हमने कहाँ से लाया? You can see any book on ग्रिफिथ की बुक देखो या इसमें भी देखो, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कैसे लिखते हैं थीटा एंड फाई डिपेंडेंस टर्म्स. तो हमने ओनली और का लिया टर्म्स. तो पहला फॉर्म इसका ये आएगा, दूसरी टर्म ये आएगा एंड अपना पोटेंशियल एनर्जी आएगा. ठीक है. So we have done nothing. We have not done this Schrodinger equation in terms of this Hamiltonian. For first few terms it will have this form. So अगर ऐसा है then अब जो हमने कल if you remember जो L है L square L वो हमने लिखा था into L plus 1. हमारे पास जो कल डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी ना लिखी, these only solutions could satisfy L. ठीक है. L into L plus 1. So we are going to substitute here. So the equation will have this form. Equation will have this form. R square d by dr L into L plus 1 by 2m r square h square plus dr and for radial eigenfunctions. For radial eigenfunctions, it's E or E. So psi has psi जो है इसकी radial dependence क्या है? Radial dependence. R. So it's sometimes convenient to use हम इसको U को ऐसे लिखेंगे. U is equal to R. अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे radial dependence को in terms of U लिखेंगे. This equation can be in the form like this. इसी को हम ऐसे लिखेंगे the same equation, but यहाँ पर bracket में आएगा. It's the same equation here. तो bracket में लिखेंगे as E. Yes. अब हम करेंगे this is general form of Schrodinger equation with these values and operators. अब हम करेंगे काम free particle as central force problem. इसमें क्या है फ्री पार्टिकल में क्या है पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट और इट्स इक्वल टू 0. तो जो हमारे पास B है B यहाँ पर दिस और दिस यू कैन टेक इट कांस्टेंट और यू कैन टेक इट 0. So we can have this equation will have this form. तो जो h square by 2m del square है अपना, तो यहाँ पर हम कर देंगे प्लस b del square psi, but इसके साथ हम लिख देते हैं प्लस b, but we don't write b, it's equal to e psi. h psi is equal to e psi, so del square by 2m. ये तो पहले टर्म प्लस b आता है इसमें ऑलरेडी. So here we only like del square. Or we can write, if you want to write that equation, this equation, इसका फॉर्म आएगा ऐसे h square by 2m r square d by dr of
r square d by dr plus L into L plus 1, these are values, 2m r square. So we will not write this term, potential dependence term. It is 0 because we will not write it. You can ignore it. So r is 1 er. So it said how we can solve for spherically symmetric potentials with only a radial dependence. That where potential is constant or we can neglect it. This can be written, this equation can be not this form. Or again we can solve for process को simplify करेंगे. Simplify करेंगे we can write जो है ना h can be written as twice me. Since hk is you can write it as twice me, this is propagation of lambda. You can write it like this. So if you can write it like this, so हम यहाँ पर जो e है ना, इसमें यहाँ substitute करेंगे, we make some modifications, ठीक है? इसको this value of h in terms of k, we are going to write it here. So if you write it here, it will be the equation will take this form. d by dr r square d by dr ये है ना h m r square ये वहाँ जाएगा, ठीक है, प्लस l plus 1 by 2m r square या r square r square 2m 2 उधर जाएगा r is going to be k square r, ठीक है. So we have done this modification. इसको हमने and इसको वहाँ लेंगे we can have this one. Now again we can do some other modification. Other modification है कि we introduce a parameter rho. ठीक है, rho को हम ऐसे लिखेंगे 2m. We can scale the radial coordinate by introducing a dimensionless variable. Dimensionless variable is क्या है? Dimensionless variable means you can इसकी dimension आप देखो energy की, h की, m की, so it will be. So why we are doing it? इसका अपना एक logic है, ठीक है? So we will do another. We will introduce a parameter rho, which is a dimensionless variable. So rho is equal to this, and this is equal to kr. So again, so इसमें थोड़ा सा exercise है. Since we don't have to take maybe 10 मिनट लेंगे आगे, ठीक है, or you can do it at your place. Why introducing rho here in this equation? ठीक है, this equation will take this form. This equation will take, but you should at your place just try to figure out. अगर rho को यहाँ substitute करेंगे इस form में, ठीक है, the equation will take this form. It will take form will take for d2r by d rho square 2 by r rho d rho by d2 plus 1 minus l into l plus 1 rho square r is equal to 0. So it's an exercise. ये थोड़ा सा 4-5 का थोड़ा सा ये आपको एक गुना है, ठीक है, but I recommend you just try to convince yourself. ऐसे मान के since the book ने सीरीज चलाया, do it here, but अब time shortage है, तो आप इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है. तो आप ये why you are writing this? We want to write it in terms of so this differential equation जो हमारे पास है, it is has a form side and it has a form of a, इसको हम बेसल इक्वेशन में भी लिख सकते हैं. बेसल इक्वेशन तो आपने पढ़ी होंगी ना, डिफरेंशियल इक्वेशंस, बेसल, लीजेंडर, हेर्माइट, है ना, रेग्यूलर, एसोसिएटेड लीजेंडर, these are different. So आप इसको आप कैसे बेसल इक्वेशन लिखिएगा, और अगर हम in terms of j rho by rho लिखें, तो
R को हम ऐसे लिखेंगे, R को अगर ऐसे लिखेंगे d over 2, so you can see dr by 1 की d rho, d2r by d rho square, यहाँ है minus 1 by rho square denominator में, and due to substitutions here in terms of Bessel equations, this equation for regular solutions of Bessel equations will have this form: dj by d rho plus 1 minus L plus 1 by 2 square and rho square J is equal to 0. So again, it's another exercise coming from here to here. But the point is that we can write this equation in terms of Bessel functions. ठीक है? Bessel function में J है ना, J की फॉर्म में लिखा है. इसलिए कल हमने in terms of legend लिखा था, है ना? एक्सपेंशन. अब यहाँ लाने से क्या फायदा है? So we have a regular solution, and here we do not have singularity at r is rho is equal to 0 की singularity Bessel function में नहीं आती है. So we can have जो उसका Bessel function का हम अगर निकालेंगे, if you go to equation 12.12, equation of 12 ये बात है. So JL can be defined as expansion of Bessel function S. So I again recommend you just go and see Bessel functions like S now because of solutions. These are known as spherical Bessel functions. क्या कहते हैं? Spherical. Again, इसमें जो एक्सपेंशन है ना JL का यहाँ पर, तो इसका एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ L यहाँ पर इट कैन बी फॉर ऑड वैल्यूज एज वेल एज, है ना, 0 अगर ऑड है तो 3/2, 5/2, 7/2, इवन है तो अकॉर्डिंगली यू विल हैव बोथ सॉल्यूशंस फॉर दिस. साइड दैट अगर इसको हम इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, JL z कैन बी एज z फॉर L plus 1 z s 1 minus s square L. So we can have जो Bessel functions की even and odd solutions हमारे पास आएंगे 2 to the power L. So here we will get, you can just go any book on mathematical physics. तो Bessel functions की फॉर्म कैसे लिखेंगे? J z for जिस तरह जनरेटेड फंक्शन निकालते हैं for even and odd values, because we have expressed this differential equation in terms of J. Now J में हमको solution निकालते हैं. So finding solution in J means you are finding solutions of solving Schrodinger equation, because J is actually R की form में. R is the radial dependence in the Schrodinger equation. ठीक है? The logic proves that. So J as that is L factorial 2L plus 1 factorial for even odd solutions. So we thus see the spherical Bessel. अब ये इस यहाँ से argument है. Argument ये है कि that we see that the spherical Bessel function J L T, this is a regular solution of radial equation. Radial equation कौन सी वाली? ये वाली. ठीक है? This and ये हमारे यहाँ निकाले. These are the eigen values जो हमारे निकाले. L into L plus 1. So we have seen radial function is a radial solution of radial eigenfunction of Schrodinger equation. असली Schrodinger equation कौन सी है? ये वाली. हमने जानते हैं हमने R square ये वाली. इसकी solution. After that we just introduce rho.
रो को इंट्रोड्यूस करने के बाद हमने रो को इन टर्म्स ऑफ जे को इन टर्म्स ऑफ बेसल फंक्शन दिखा, फिर उसकी और डिपेंडेंट वैल्यूज आ सकती हैं. सो यू कैन सी, सो बेसिकली सोल्यूशन है, रेगुलर सोल्यूशन होता है, स्फेरिकल आइगन फंक्शन होता है, स्फेरिकल बेसल फंक्शन है. इट्स अ रेगुलर सोल्यूशन ऑफ रेडियल आइगन फंक्शन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन. Again, you can do another thing is you can write जिस तरह हमने कहा था, again जो ये ना बेसल फंक्शन, लीजेंडर, लिक्यूड, एसोसिएटेड, these are different functions हैं. You can write again बेसल functions को लीजेंडर पॉलिनॉमियल्स में लिख सकते हैं. So JL जो हमारे पास ये है यहाँ पर JL, you can write it in terms of लीजेंडर पॉलिनॉमियल. So we can write it in terms of Legendre polynomials. Okay, so you can write this Bax function in terms of Legendre polynomials. So the solution of Bessel equations, this at the end can also be written in terms of Legendre polynomial. So you can translate it. And further, if you are interested, you can do the other exercises also. जैसे spherical Bessel function है, cylindrical Bessel function है, Hankel function है, Newman function है, ठीक है? These are all functions. You can relate one function with the another function, some formula. How Bessel is related with Legendre is related with liqueur is related with Hankel function, ठीक है? But हमको बेसिकली निकालना spherical function of this Schrödinger equation का solution, ठीक है?